In this lecture, we will study about the structural and functional unit of kidneys, which is known as nephron. So, nephron is known as structural and functional unit of kidneys because each kidney contains about 1 million nephrons. So, it acts as building block for the kidneys, and also it performs all the functions of the kidneys. And therefore nephrons are known as structural and functional unit of kidney. This is the structure of a nephron, a single nephron here. Now, the structure, the first part of nephron is this structure, which is cup-shaped structure. Cup-shaped structure. It is a cup-shaped structure and known as Bowman's capsule. Bowman's capsule. Bowman capsules is a cup-shaped structure. So this cup-shaped structure, which is made up of two different types of cells. आपको याद रखना है कि जो कप सेप्ट स्ट्रक्चर यानी कि बोमेन्स कैप्सूल है, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ये दो तरह के सेल से बने होते हैं. पहला जो कि अंदर का सेल है, ये अंदर का सेल है. आपको याद रखना है कि कोई भी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसकी इनर लेयर को हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं. तो ये एंडोथेलियम है जो कि पोडोसाइट से बना होता है. पोडोसाइट्स मीन्स द सेल्स which has a number of feet like structure. पोडो मतलब याद रखना है आपको कि लेग्स लाइक स्ट्रक्चर, फीट लाइक स्ट्रक्चर होता है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंटरनल जो सरफेस है सेल का वो फीट लाइक है और इसी की वजह से इसको पोडोसाइट्स कहते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम or epithelial cell. It is a type of cuboidal epithelial cells. And the outer layer of the Bowman capsule, which is ectothelium, and it is made up of squamous epithelium or epithelial cell. So the outer part of the Bowman capsule is made up of squamous epithelium, and the inner portion is known as cuboidal epithelium, which are also known as podocytes because these cuboidal shaped structures have a number of feet. Now, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बीच का पार्ट है, मतलब बोमेन कैप्सूल जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके जो बीच का ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहेंगे कैप्सूलर स्पेस. अब हम लोग देखते हैं कि इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है. ये रीनल आर्टरी है और रीनल आर्टरी से जो पार्ट यानी कि ब्रांचेज हुआ उसको हम लोग कहेंगे आर्ट्रियोल. तो रीनल आर्टरी branch and rebranch to form a number of afferent arteriole. Afferent. It is known as afferent arteriole. Afferent arteriole मतलब ये ब्लड को रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस के अंदर, जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर सेट होता है, फिट होता है, उसके अंदर लाते हैं. एफरेंट आर्टियोल. और इससे जो ब्लड को लेके बाहर जाएगा उसको कहेंगे इफिरेंट आर्टियोल. इफिरेंट आर्टियोल. आपको याद रखना है कि आर्टियोल जब ब्रांच्ड होता है, ठीक है, तो वो वेन्यूल बनाता है, ये कैपिलरीज बनाता है और कैपिलरीज आपस में मिल करके वेन्यूल बनाते हैं. लेकिन जब हम लोग नेफ्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है. और इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि रीनल आर्टरी ब्रांच होकर के एफरेंट आर्टियोल बनाएगा और फिर ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाएगा जिसको हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलस. सो हियर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज glomerulus.
It is also known as primary capillary network. So it is a type of network which is also known as glomerulus. So glomerulus fits in the cup-shaped structure of Bowman capsule. Efferent arteriole is the arteriole which carries filtered blood from the glomerulus, from the Bowman capsule to the vein, and it forms a venule, and then it forms renal vein. So in this way here, the capillaries, it is the primary capillary network. It does not unite to form venule, but it unites to form again arteriole, and this arteriole is known as efferent arteriole. आपको याद रखना है, efferent means incoming, efferent means outgoing. So blood is carried to the glomerulus through the efferent arteriole, and after filtration, the blood from glomerulus is carried to renal vein through this efferent arteriole. Now, one more thing here. You can observe that the internal diameter, which is known as lumen. So the lumen of afferent arteriole is wider, whereas the lumen of efferent arteriole is narrower. ये क्यों होता है? इससे क्या फायदा है? तो आपको याद रखना होगा कि जब ब्लड इस एफरेंट आर्टियोल में जो नैरो ब्रॉड लुमेन है, वाइड लुमेन है, इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड की फ्लो ज्यादा होगी, ब्लड ज्यादा अंदर आएगा ग्लोमेरुलस की तरफ. लेकिन जब यहाँ से एफरेंट आर्टियोल का लुमेन छोटा हो गया, नैरो हो गया, तो ब्लड कम कम बाहर जाएगा. इससे क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा. कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कैपिलरी नेटवर्क. So due to excessive pressure, filtration takes place here in the glomerulus, which is the first step of urine formation, which is known as ultrafiltration. So ultrafiltration takes place in the glomerulus and in the Bowman's capsule. आपको ये भी याद रखना है कि glomerulus plus Bowman's capsule ये दोनों को हम लोग एक साथ कहेंगे रीनल और मैल्पीजियन कैप्सूल. तो glomerulus, this one is the glomerulus, and here it is Bowman capsule. These two structures are collectively known as renal or Malpighian capsule. तो रीनल या मैल्पीजियन कैप्सूल के अंदर ये Bowman कैप्सूल जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है, और जो प्राइमरी कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम लोग यहाँ पे ग्लोमेरुलस कहेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर को साथ साथ हम लोग रीनल और मैल्पीजियन कैप्सूल कहेंगे. नाउ आफ्टर इट filtration of blood, which is the first part of here urine formation. Urine formation, it includes 3 steps. The first step is ultrafiltration. Ultrafiltration है क्या? The filtration of blood under high pressure in the glomerulus and in Bowman capsule of nephron is known as ultrafiltration. So here filtration takes place of blood. Where? In the Bowman capsule as well as in the glomerulus. Why? When the pressure is exerted enormously due to difference in the lumen of afferent arteriole and efferent arteriole. मैंने आपको पहले ही बताया कि afferent arteriole की lumen ज्यादा है और efferent arteriole का जो lumen है वो narrow है. और ये afferent arteriole and efferent arteriole के lumen के बीच में जो difference है, उस difference की वजह से ultrafiltration process होगी under high pressure.
So filtration of blood under high pressure in the Bowman capsule and the glomerulus is known as ultrafiltration. It is the first step. अब क्या होता है फिल्ट्रेशन के दौरान? आपको याद रखना है कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन ये दो चीजों को छोड़ के रेस्ट जो पार्ट्स हैं ब्लड के जो कि प्लाज्मा में हैं वो सभी के सभी फिल्टर होकर के वोमेन्स कैप्सूल की स्पेस जिसको कि कैप्सुलर स्पेस कहते हैं यहां पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा एक्सेप्ट blood cells and plasma proteins, the rest substances which include glucose, water, amino acid, salts, and some other organic substances. So all these substances are filtered, and this filtrate is known as glomerular filtrate. इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहां से जो आ रहा है जो एक फिल्ट्रेट उसको हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस सब्सटेंस को, इस फ्लूइड को हम लोग यूरिन नहीं कह सकते। Why? Because it contains useful as well as harmful substances, and therefore it cannot be considered as urine, but it is known as glomerular filtrate. So glomerular filtrate contains useful as well as harmful substances both, except ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये दो चीज क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये दोनों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मींस प्रोटीन्स जो होता है वो एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बना, और ये पार्टिकल्स बड़े हो जाते हैं जो कि छन नहीं सकते। और ब्लड सेल्स भी आप जान चुके हैं पहले ही कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर लार्ज सेल्स and or corpuscles, and therefore they cannot be filtered. So they remains in the blood, and these are carried by efferent arteriole to outside and finally to the renal vein. अब आपको याद रखना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यूजफुल और हार्मफुल दोनों तरह के सब्सटेंसेस। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है कि फिल्ट्रेशन होता कैसे। आपको याद रखना है कि जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस में जो कि कैपिलरी का नेटवर्क है उसमें आ गया, आपको याद रखना चाहिए कि कैपिलरीज में केवल एंडोथेलियम होता है, यानी कि इनर वॉल होता है उसका, जो जैसे आप पढ़ चुके हैं कि आर्टरी में, वेन में मिडिल मस्कुलर लेयर होता है, आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है, वो इसमें नहीं होता। तो डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इजली, और यू कैन से here active as well as passive transport takes place simultaneously। साथ साथ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ सब्सटेंसेस जो कि आराम से नहीं पास हो सकते जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान, और जैसे वाटर वगैरह हैं उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट के दौरान फिल्टर किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पोडोसाइट्स विच आर a type of cuboidal epithelial cell, and it is present on the inner wall of the Bowman capsule। अब देखिए यहाँ पे दो सेल के बीच में, दो पोडोसाइट के बीच में गैप है, और इस गैप से होकर के जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ जो सब्सटेंसेस है वो पास करके बोमेन कैप्सूल की स्पेस में आता है, जिसको कैप्सुलर स्पेस कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? आपको याद रखना है कि इसको हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेशन पोर। Filtration pores or slit pores. It is also known as slit pores. Filtration or slit, S-L-I-T, slit pores. So these pores help in filtration of substances from the blood. So between the podocytes or the cuboidal cells, some pores are present, and these pores are known as filtration or slit pores, and through these slit or filtration pores, substances which are smaller in size can be poured in the space present in the Bowman capsule, which is known as
capsular space. It means the filtration takes place from the wall of capillaries present in the glomerulus and also through the wall of Bowman's capsule. So here two-level filtration takes place. And finally it comes in the capsular space, and this filtrate is known as glomerular filtrate. It is not considered as urine because it contains useful as well as harmful substances both. Now this filtrate, glomerular filtrate, comes towards the tubular structure, and this tubular structure is known as renal tubule. So now after the Bowman capsule it is known as renal tubule. तो renal tubule क्या है? Tube like structure after Bowman capsule is known as renal tubule. Means tubular part of the nephron is tubular renal tubule. Now the first part of renal tubule, here you can see here this structure which make foldings or convolutions or foldings, and this folding is known as PCT. PCT means proximal convoluted tubule. So it is known as proximal convoluted tubule or PCT because this convolution or foldings is located near the Bowman capsule. Proximal means nearer to what? Nearer to Bowman capsule. And therefore this tubular structure of nephron is known as PCT or proximal convoluted tubule. What is the function of proximal convoluted tubule? तो आपको याद रखना है कि सेकंड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो होता है उसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन. It is also known as selective reabsorption. So what is the process of reabsorption? What does here take place? During the process of reabsorption, useful substances are absorbed again by the wall of blood capillaries which are located around the PCT. तो PCT के आसपास जो भी ब्लड वेसल है, जो कि इफेरेंट आर्ट्रियोल के नीचे आने के बाद ये सराउंड करता है PCT के चारों तरफ, और इसके अंदर ब्लड का जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और बाय डिफ्यूजन प्रोसेस हियर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेसेस ऑफ all useful substances. So about 60% of reabsorption takes place in PCT, only 65%. Rest 35% takes place in the Henle's loop and the DCT, but it is better to say reabsorption takes place in PCT because 65% of useful substances are reabsorbed in PCT. So function of PCT is here, function of PCT is reabsorption. So reabsorption takes place in PCT, but actually reabsorption takes place in different parts of the nephron, such as in the Henle's loop and DCT also. So here in the PCT, absorption takes place, and it includes most of the water and glucose and also amino acids and sodium. So water and amino acids are the substances which are reabsorbed in all the parts of nephron, such as in the PCT, in the Henle's loop and in the DCT. Some part of water is also absorbed in collecting duct, but collecting duct is not a part of nephron. This one is the collecting duct, and we will discuss about it
in the next part of the class. Now here, in the PCT, reabsorption of substances takes place, and after it, the second part of the renal tubule is the Henle's loop. This one is the Henle's loop. Henle's loop contains two parts, and these are, number one, descending part, descending limb of Henle's loop or loop of Henle. It is descending because here filtrate moves towards the bottom, and this part of the Henle's loop is known as ascending loop, ascending limb of Henle's loop. So here descending limb of Henle's loop, and this one is the ascending limb of Henle's loop. Two loops make a U-shaped structure. Here you can say it is U-shaped structure, or it is also known as hair clip-like structure. हेयर क्लिप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हेयर क्लिप लाइक स्ट्रक्चर है या फिर यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि लूप कहलाता है, और इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इस पार्ट को जिसमें कि ब्लड जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इसको कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, और ये वाला पार्ट में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ उठता है जिसको हम लोग कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, और ये दोनों लूप मिल करके हेनलेज लूप बनाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट ये वाला पार्ट मेडुलरी पिरामिड्स में होते हैं या रीनल मेडुला के पार्ट में होते हैं, जबकि मोमेंट कैप्सूल, पीसीटी और ये डीसीटी, ये तीनों पार्ट ठीक है कॉर्टेक्स में रहता है, रीनल कॉर्टेक्स में रहता है, और इसी वोमेन्स कैप्सूल की वजह से जो आउटर पोर्शन ऑफ किडनीज है जिसको हम लोग रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं वो डॉटेड अपीयरेंस शो करता है। इन द हेनलेज लूप in this part means descending limb of Henle's loop, only water is reabsorbed. Water is reabsorbed in the descending limb, and in the ascending limb, sodium and water both are absorbed. So different types of substances or ions can be exchanged between the Henle's loop and the vasa recta here, and it is DCT. DCT means distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule. Distal means far away, so it is located far away from the Bowman capsule, and therefore it is known as distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule ये दूसरा कन्वोलेशन से फोल्डिंग से, और ये Bowman कैप्सूल से दूर है इसकी लोकेशन, और इसी की वजह से इसको डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। इस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आपको याद रखना है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है, सॉल्ट्स, एंटीबायोटिक्स और कोई भी तरह के ड्रग्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो सभी को यहाँ पे pour कर दी जाती है through the wall of DCT, and this process is known as tubular secretion. So tubular secretion mostly takes place in DCT, but it is not correct to say here means in the DCT only tubular secretion takes place. Tubular secretion takes place in all the parts, means PCT, Henle's loop and DCT, but most of the substances are poured here, and therefore DCT is the site of tubular secretion. Now the flow of blood in this renal artery takes place here. You can say in this way the blood is flowed, and now
blood is flowing through here, and finally it moves downwardly and here upward. So here this is the arrangement of the capillary network so that there is a counterbalance mechanism can take place. What do you mean by counterbalance? Counterbalance means यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फिल्ट्रेट हेनलेज लूप के डिसेंडिंग लिम्फ में नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन उसी तरह वहीं पे हम लोग देखते हैं कि ये जो भासा रेक्टा है, भासा रेक्टा, जिसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क भी कर सकते हैं। तो इस सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क जिसको भासा रेक्टा कहेंगे, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे हेनलेज लूप का डिसेंडिंग लिम्फ में ब्लड फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके पास जो भासा रेक्टा का पार्ट है उसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है ब्लड। दूसरी तरफ देखेंगे डिसेंडिंग लिम्फ में जो कि ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल का नेटवर्क है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ब्लड का फ्लो होता है, नीचे की तरफ ब्लड फ्लो करता है। इससे क्या होगा? एक काउंटर बैलेंस मैकेनिज्म डेवलप करेगा। काउंटर बैलेंस मतलब एक दूसरे का अपोज करने वाला डायरेक्शन। इससे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस, रीअब्जॉर्प्शन आल्सो can take place here between descending and ascending limbs of healage loop as well as in the vasa recta. So vasa recta or secondary capillary network is present around the descending and ascending limbs of healage loop. And DCT here at first try to observe front arteriole branches and rebranches to make a number of blood capillaries around PCT, then DCT, and after it moves towards the healage loop downwardly, and here it surrounds and makes capillaries network between two limbs, and finally it moves upward direction, and finally it makes venules, and a number of venules unite together to form renal vein. So renal vein carries deoxygenated but filtered blood from the nephron as well as kidneys to the outward. Now after the tubular secretion which takes place in the DCT, the filtrate is poured in the collecting duct. Now this is known as urine. Here it is urine. So urine is the filtrate after tubular secretion in DCT. So after DCT pours the substance or liquid substance in collecting duct is known as urine. It is collecting duct and it is located located in the medullary part of the renal capsule, means kidneys in the pyramids. And also this structure means healage loop. Healage loop and collecting duct are located in the medullary part of the kidneys, whereas Women capsule, PCT and DCT, these are the three parts of nephron which are located in the renal cortex. तो renal cortex के अंदर nephron का तीन part, पहला women capsule, दूसरा PCT और तीसरा DCT लोकेट होता है, जबकि हेनलेज लूप और कलेक्टिंग डक्ट ये दो पार्ट ऐसे हैं नेफ्रॉन के, मीन्स हेनलेज लूप जो कि मेडुला में लोकेट होता है और साथ में कलेक्टिंग डक्ट भी, लेकिन आपको याद रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बट इट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स. सो ये एक नेफ्रॉन है, यहाँ पे जो ब्रांचेज आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स
यूरिन को इस कलेक्टिंग डक्ट में पोर करता है और फाइनली ये पेल्विस, इसको कहेंगे ये पेल्विस है, पेल्विस, और इस पेल्विस में जमा होता जाता है और धीरे धीरे इस पेल्विस से होके यूरेटर जो बनेगा, जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक। और इस तरह से ये मैकेनिज्म हुआ, ये स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हो गई जो कि नेफ्रॉन में होता है। इसके बाद हम लोग कुछ और पार्ट्स हैं जैसे ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, होमोस्टेसिस, और ये सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में समझ पाएंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।